1 week has gone by. Welcome to day 8 of the 21-day meditation challenge. Anything we do in our life creates an impression in our chitta, our consciousness. Food is one of the deepest impressions on human consciousness. Though we can choose what to eat, what to put into our mouth, but the process of digestion after we have eaten is entirely out of our conscious control. Or is it? In today's meditation, Gurudev gently guides our awareness in a way that makes the digestive process more effective. हम जीवन में जो भी करते हैं उसकी छाप हमारे चित्त पर पड़ती है और भोजन करना किसको पसंद नहीं है। खाना खाने का संस्कार एक गहरा संस्कार है हमारे चित्त में। क्या खाना है इस पर तो हमारा नियंत्रण है, पर जब वो अन्न नीचे जाता है तो पाचन प्रक्रिया पे हमारा कोई काबू नहीं है। यह है और आज के ध्यान में देखते हैं कि कैसे पचन क्रिया की ओर सजगता ले जाके शरीर में पाचन शक्ति हमारी बढ़ जाती है। तो शुरू करते हैं। When we are in this lockdown, I think people are eating too much. That's what I heard from many. We don't have place to go to do exercises. We can't even go for a long walk. We are locked down and we get bored, and so we keep eating. But then how about our digestive power? That takes a beating, right? Power to digest goes low, but the tendency to eat remains the same. So let's do something about our digestive system today. Okay? In meditation, we are going to take our attention to our tummy. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, I am the fire, digestive fire in your belly, which digests all type of food. This is Lord Krishna saying in Bhagavad Gita. So it is the consciousness which is there in our belly which digests our food. हमारे पेट में जो वैश्वानर अग्नि है, वो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं वह वैश्वानर अग्नि हूँ और मैं तुम्हारा भोजन को पचाता हूँ, पाचन शक्ति मैं हूँ। ये जब कह रहे हैं ध्यान पाचन शक्ति की ओर ले जाते हैं। आज हम आराम से बैठे, let us sit comfortably and easily and let us close your eyes. आराम से बैठें और आंखें बंद कर लेते हैं। एक बार पूरा शरीर को मन ही मन देख लें, अनुभव कर लें। Just become aware of your whole body. Your body is a precious gift to you from nature. यह शरीर एक अद्भुत देन है, ईश्वर से मिला हुआ अद्भुत देन है। Honor your own body. अपने ही शरीर को आदर पूर्वक देखिए, सम्मान से देखिए। Our body is our first dimension. Just feel your whole body from head to toe and toe to head. When you bring your attention to your own body, you may feel little restlessness, little jittery or some discomfort here and there. Never mind. Let it be. The second dimension of ours is our breath. Let's take our attention to our breath.
जब ध्यान शरीर पर लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बेचैनी, कहीं कुछ झंझनाहट हो सकता है, उसको रहने दें। अभी अपना सांस पर आ जाइए, हमारा दूसरा आयाम है। इस सांस के वजह से हमारा शरीर जीवित है। Our body is alive because of this breath. Become aware of your breath. There is air all around you and inside of you. Like fish in the water, we are in air. जल में जैसे मछली है, वैसे हवा में हम। Take a deep breath in, feeling the air all around you, and breathe out and relax. सांस लेते लेते हमारे चारों ओर जो हवा है उसको और भीतर जो हवा है दोनों को महसूस करें और छोड़ दें। Let's take our attention to the third dimension, the mind. Our body is like the wick of a candle, the mind is like the glow. शरीर बाती है तो मन ज्योति है, मन के भीतर शरीर है। Our body is inside the mind. Mind is much bigger than the body. Let's take a deep breath in and let go. जो भी विचार आ रहे हो मन में आने दें, अच्छे बुरे कोई भी विचार आए आने दें। Whatever thoughts are coming in the mind, just let them come. Good thoughts, bad thoughts, embrace them all. Let's take your attention to the top of the head. सिर के चोटी पर ध्यान रखें। And become aware of the empty space above your head. सिर के ऊपर जो खाली जगह है उसका भी स्मरण करें। Now let's take our attention slowly from the ceiling of the hall we are sitting onto the body and slowly down. अपना ध्यान छत से धीरे धीरे नीचे लेके आइएगा। सिर के चोटी से फिर अपना ध्यान को शरीर के एक एक अंग को स्मरण करते हुए पेट तक पहुंचते हैं। Let us bring our attention from the top of the head to forehead, back of the head, and notice your eyes are tired.
Let the eyes find deep rest. Relax your eyes and bring your attention from your eyes down to your nose, to your palate, cheeks. Bring your attention gently down the throat. धीरे धीरे अपना ध्यान को आँखों से, फिर नाक से, फिर जिह्वा से धीरे से गले तक लेके आएगा. Gently bring your attention to the throat, as though a viscous fluid is flowing from the head, like a honey or some oil flowing slowly to the throat. जैसे गाढ़ा कोई द्रव नीचे उतर रहा हो, जैसे शहद है या तेल है, वैसे अपनी ध्यान को, अपना चेतना को धीरे धीरे गले तक लेके आए. Now bring your attention to both your shoulders and arms. Notice how relaxation is coming down your shoulders and your palms. अपना विश्राम करें. मन को दोनों भुजाओं पर लेके आए, दोनों हथेली पर लेके आए. अब देखिए झंझनाहट सी हो सकती है, कुछ तरंगें उठ सकती है, विश्राम मिलता होगा. Relax your shoulders, arms and your palms, slowly bringing your attention down from the chest to the stomach region. Stomach, liver, pancreas, spleen, gallbladder, intestine, this area. Keep your attention on the belly button. मन को अपनी नाभि में रखें. And let your mind move deep into your stomach layer by layer. Don't be in a hurry. Slowly penetrate layers of your stomach region, the skin, and then take your mind deeper. Feel the belly. If you want, you may take a couple of deeper breaths. एक आध गहरी सांस लीजिए. पेट बाहर आ रहा है अभी और नीचे जा रहा है, तो पेट पर ध्यान बनाए रखें. परत दर परत मन को पेट के भीतर धीरे धीरे जाने दीजिए. Let your mind filter through layers and layers of tissues of your belly, feeling each layer, feeling the muscles, the nerves. Let it move to the central empty space.
पेट के बीचों बीच खाली जगह है, वहाँ तक धीरे धीरे अपने मन को चारों ओर से लेके जाइए। चारों ओर से पेट के भीतर धीरे धीरे मन जा रहा हो, ऐसा भाव करें। With the rhythm of the breath, you can feel the tissues, the internal organs. Take your mind without visualizing much about it. कोई ज़्यादा कल्पना न करें, सिर्फ मन को अंदर ले जा रहे हैं, इतना ही काम है। अपने मन को पेट के बीचों बीच रखे हैं। इस वक्त आप इस भाव से विश्राम करें। As though you're putting your entire attention in the center of your belly, middle of your belly, deep inside, relax and repose. You were in someone else's womb before you came into this planet. Now let your mind just be deep in your own belly. हम किसी के पेट में थे पहले, उनके गर्भ में थे। अपने माँ के गर्भ में हम थे पहले। इस वक्त अपना मन को अपना पेट के भीतर रख दें और विश्राम करें। Relax and let go all your effort. इस वक्त सभी प्रयत्न छोड़ दें। There is this fire in your belly, and that digests your food. अपने पेट में जठराग्नि है, वह चेतना है। The consciousness is permeating this energy, this fire energy. Our consciousness is permeating every cell of our belly. Little more attention in your stomach. A gentle feeling, a gentle attention is all that we need to do.
Let go of all your efforts. इस वक्त सब प्रयत्न छोड़ दें. कुछ भी नहीं करना है, छोड़ दीजिए. मन जहाँ जाना चाहे वहाँ जाने दें. Let go of all your efforts. Let the mind go in all directions, wherever it wants to go. Let it dissipate. Just relax. Every cell of your body is full of energy. In the stomach region, there is enormous energy. That digests and disseminates the food. Let your mind penetrate deep into the tissues of your liver, pancreas, gallbladder, all the internal organs. Now let go of all the efforts. No more efforts, just relax and repose in yourself. अब सब तरह की चेष्टा को छोड़ दें. शरीर के खास तौर से पेट के कण कण में चैतन्य शक्ति जगी है. पाचन शक्ति पूर्ण रूप से जगी है. अब विश्राम करें. ना ही कुछ करना है, ना कुछ जानना है. सब There's nothing to know and nothing to do right this moment. So just relax, relax and let go. Om Shanti, Shanti, Shanti. And slowly and gradually become aware of body and surroundings.
Anywhere you find tension, just relax it and let it be. Just accept it, let it be. Relax and relax. And you may gently open your eyes. As you would have felt with Gurudev's meditation, meditation improves our gut health. Also, the gut feeling, our intuition develops. And to be able to willingly accept a challenge, one needs guts. And since you're here, you have guts, you have the courage. Our daily practice of meditation also leads to mindfulness in action. Meditation is being, mindfulness is doing. Just as we are having the being challenge, every day we are also having a doing challenge. So, your next meal, and till we meet again, whatever food you eat mindfully, eat wholeheartedly, enjoying every bite, every bit of it, because the food that you eat becomes you. Stay tuned with us for day 9 of the 21-day meditation challenge. See you tomorrow at 7:30 p.m. India time.